I don't pray in time. When I tried and don't find any spirituality while praying, okay, I don't pray on time. So that's because you don't sleep on time. So stop watching Netflix and you can sleep and wake up early. And the practical advice would be, अगर आप अपनी नमाज़ों के साथ एक कोई और हैबिट एसोसिएट कर देना, जैसे लंच के साथ ज़ोहर एसोसिएट कर दिया, तो जब भी लंच हुआ तो दिमाग में आ गया वो लंच टाइम, which means ज़ोहर time. They become one and the same because you connected those two things together. सुबह में आप एक्सरसाइज करें, फ़र्ज़ करें, right? Exercise time, oh फजर time, it's the same. Now it becomes, अगर एक दिन नमाज याद आ गई, एक्सरसाइज याद आ गई, एक दिन एक्सरसाइज आ गई, नमाज याद आ गई, दोनों एसोसिएट हो गए एक दूसरे के साथ, राइट? तो 5 नमाज़ों के साथ अगर आप 5 एक्टिविटीज़ को एसोसिएट कर दो ना, तो फिर first of all it will bring discipline in your life and you'll be doing good things on a regular basis, and also inshallah you'll become regular with your prayer.